लॉकडाउन की पाठशाला रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। कल पिछली कक्षा की भांति आज भी हम लोग एक्सरसाइज 9.4 के सवाल सॉल्व करेंगे। जैसा ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0. So we have to separate y terms and x terms. So dy equals to e raised to power x minus e raised to power minus x upon ex plus e raised to power minus x into dx. Clear? Next, integrate both the side. Dy equals to ex plus e raised to power minus x upon minus e raised to power x plus e raised to power minus x dx. So let substitution करेंगे z equal to e raised power x plus e raised power minus x. So dz becomes e raised power x minus e raised power minus x dx. So here integration dy equals to dz upon z. So y becomes 1 by z log z plus c. So y equals to log, in the place of z I am writing ex plus e raised to power minus x plus c. This is the required general solution of the given differential equation. This is the answer. Okay. Now the next question is x raised to power 5 dy by dx is equal to minus y5. So I am writing here as dy by dx equal to minus y raised to power 5 upon x raised to the power 5. So dy upon y raised to power 5 equals to minus dx upon x raised to the power 5. Now I am just taking both as here equals to 0. Now integrate both the sides. So integration dy upon y raised to power 5 plus dx upon x raised to power 5 equals to 0. So the integration of this one, minus 1 by 4 x raised to power plus y raised to power 4 plus minus 4 x raised to power 4 equals to constant k. So when we take minus 1 by 4 as common, we have 1 raised to power 4 plus 1 raised to power y4 equals to k. So 1 by x4 plus 1 by y4 equals to minus 4k. I am writing here c. Because k is a constant, minus 4k is also constant. So 4k is complete c, and this one is minus x raised to power minus 4 plus y raised to the power minus 4. This is the required general equation of the given differential equation. Clear? Now the next question is cos dy by dx equal to a, where a belongs to real number. y equals to 1 when x equal to 0. This is the initial value problem, है ना? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो dy by dx इक्वल टू ये, इसके लिए cos इनवर्स a, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म cos इनवर्स a. सो dy इक्वल टू cos इनवर्स a dx. क्लियर? सो नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड. dy equal to cos inverse a into dx. So cos inverse a is the constant term, so we can write here cos inverse a into x plus c, and this is y. Now what the question says that y equals to 1 when x equal to 0. So we have to put here y is equal to 1 cos inverse a into x equal to 0 plus c. यहाँ पर देखिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब हुआ कि जब x एंड y का वैल्यूज आप पुट करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है
वो कांस्टेंट टर्म का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाते हैं ताकि कांस्टेंट वैल्यू हमेशा मिल जाए। So y equal to c. Therefore, our y becomes cos inverse a into x plus in the place of c it is 1. So this is the required equation of the given differential equation. Clear है? Okay. The next question is dy by dx equal to y tan x. Again इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट हम लोग को c फाइंड कर लेना है ना, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ c फाइंड करना है। तो dy अपॉन y इक्वल्स टू tan x dx। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dy अपॉन y इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x dx। देखिए जितना भी आपने इंटीग्रेशन पहले से पढ़ा है उस सब का एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाता है। सो dy by y मीन्स log y, tan x log sec x। तो दोनों साइड हम आप पास log है तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग log c ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ दिस इज log y इक्वल टू log c इंटू sec x। क्लियर? अब क्या करेंगे, y की जगह 1 पुटअप करेंगे। सो log 1 इक्वल टू log c इंटू sec, in the place of x I am writing 0. Now 1 equal to c into 1. So this implies that c equals to 1. Therefore log y equals to log c के जगह कितना है 1 into sec x. So we have y equal to sec x. This is the required equation of the given differential equation. Clear? अब आइए वर्ड प्रॉब्लम की ओर। Find the equation of the curve passing through origin 0 0 and whose differential equation is y dash equal to e raised power x sin x. Y dash means dy by dx equals to ex sin x. So let us consider here dy by dx equal to e raised power x sin x. So I am writing dy equals to e raised power x sin x dx. Now integrating the both side, dy equals to ex sin x dx. अब आप याद कीजिए पहले ये वाला जो टर्म है ex sin x कैसे बनाएंगे हम लोग, याद करें, बाय पार्ट से। ओके, सो इसको हम लोग बनाएंगे बाय पार्ट से। सो लेट इट बी y I equals to integration ex sin x dx. Now we are going to do by parts, sin x e raised power x dx minus derivative of sin x ex dx and whole integration dx. So here it is sin x e raised power x, sin x means cos x into e raised power x dx. अगेन देखा जाए cos x ex तो cos x ex फिर से एक बार हम लोग को बाय पार्ट्स करना होगा। सो ex sin x माइनस cos x आउटसाइड ex dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ex dx एंड होल इंटीग्रेशन। क्लियर? सो ex sin x माइनस दिस इज cos x ex माइनस cos x के लिए माइनस sin x एंड ex dx एज इट इज। क्लियर है? सो ex sin x माइनस ex cos x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड सी दिस वन sin x ex dx
ex sin x dx means what? I. So I am writing here I and this is I. So I plus I. 2I equals to ex common sin x minus cos x. Clear hai? So I am writing here, therefore I equals to what? 1 upon 2 e raised to power x sin x minus cos x plus c. है ना? Now putting the value of ex sin x dx, I am writing here 1 by 2 e raised to power x sin x minus cos x plus c, and this is 1. Now the question says that find the equation of a curve which passing through 0, 0. So in the place of x I am writing 0 and y 0. So this is 0 equals to half e raised to power 0 sin 0 cos 0 plus c. So this is minus half plus c 0. So we get c equals to half. Therefore the required equation is y equal to 1 by 2 e raised to power x sin x minus cos x plus c plus में 1 by 2. This is the required equation of the given differential equation. Clear? For the differential equation xy divided by dx equal to x plus 2 y plus 2, find the solution curve passing through the points 1, 1. So solution देखिए बहुत आसान है, आसानी से बना सकते हैं आप. x plus 2 y plus 2 सेपरेट कर लीजिए आप. y अपॉन y plus 2 dy equals to x plus 2 अपॉन x dx. अब देखिए y अपॉन y plus 2 dy equals to x upon x plus 2 by x and this is dx. क्लियर है? अब आप देखें इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे. तो both having numerator and denominator both having the same power 1 and 1, so we can directly written as y plus 2 upon y plus 2 and minus 2 upon y plus 2, and this is dy equals to 1 plus 2 by x dx. So cancel, you get minus y minus 2 1 by something log equals to x plus 1 by something log x plus c, है ना. So log वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं. y minus x minus c equals to 2 times log x plus log y plus 2, है ना. So this is 2 log x into y plus 2, and this is y minus x minus c. Now the question says that the curve is passing through 1, 1. So in the place of y it is 1, in the place of x 1 minus c equals to 2 log, in the place of x 1, y की जगह 1 plus 2. So here we have minus c equals to 2 log 3. Therefore c equals to minus 2 log 3. Now the equation becomes y minus x in the place of minus c, so this plus 2 log 3 equals to 2 log x y plus 2. This is the required general equation of the given differential equation. Now if the point, again if point is 1 comma minus 1, अगर ये होता तो देखिए यहाँ क्या लिखते, x की जगह कितना लिखते, तो यहाँ देखिए y की जगह -1,
x के जगह 1 एंड c इक्वल टू 2 log 1 minus 1 plus 2. So this is minus 2 minus c equals to 0. So c becomes minus 2. Therefore, the required equation is y minus x plus 2 equals to 2 log x into y plus 2. This is the solution of the given differential equation. Hope कल फिर नए, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।